This is the third part of the video. In the first and second part of the video, we have discussed new Keynesian economics and its main features. In this video, we will discuss policy implications of new Keynesian economics. First point is monetary and fiscal policies. New Keynesians assume real world with imperfectly competitive markets, asymmetrical information, and sticky wages and prices. जो न्यू केन्जियन इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने अपना जो एनालिसिस दिया है वो वर्ड में जो रियल सिचुएशन है, जैसे इम्परफेक्ट कंपटीशन है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, स्टिकी वेजेस एंड प्राइसेस हैं, इन रियल सिचुएशंस के बेस पे दिया है. दीज लीड टू decrease in demand, economy-wide market failures, recessions, and existence of involuntary unemployment. In the first two videos, we have seen that due to imperfections, asymmetries, and stickiness, there is decrease in demand, market failures, recessions, and involuntary unemployment. Thus, there is a need of government intervention. इसलिए government intervention की ज़रूरत है in the form of active monetary and fiscal policies to prevent recessions and fall in output and employment. इसलिए जो government है it should make effective monetary and fiscal policy ताकि जो इकोनॉमी है उस रिसेशन से बचाया जा सके, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को कम होने से रोका जा सके. इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आल्सो. Now this is the diagram. Let me draw this diagram again. This is suppose real GNP, and vertical axis we are taking price level. This is suppose aggregate supply, AS, and this is suppose aggregate demand, AD1, and this is the equilibrium point, E1, and here suppose income is Y1 and price level is P1. This income Y1 level is suppose full employment level. With the decrease in demand because of the imperfections, because of the asymmetric information, because of the stickiness, suppose demand falls from AD1 to AD0.
New equilibrium is here, and now this is the level of income and this is the level of price. Suppose it is P0 and this is Y0. With decrease in aggregate demand from AD1 to AD0, price falls from P1 to P0 and income falls from Y1 to Y0 and thus recession starts. Recession start हो गया क्योंकि इनकम कम हो गई. With the intervention of active fiscal and monetary policies, demand can be increased and the economy will return to its original full employment level. Second feature, prices and incomes policies. In a new Keynesian economics, it is found that due to asymmetries and imperfections in labor market, there is involuntary unemployment. There exists involuntary unemployment. To overcome this problem, prices and income policies can increase the power of outsiders in relation to insiders. तो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो आउटसाइडर्स की पावर को इंक्रीज कर सके ताकि वो भी बार्गेनिंग करके लेबर मार्केट में, जॉब मार्केट में आ सकें. Government and corporate policies. To reduce hysteresis effect of involuntary unemployment, hysteresis effect हमने स्टडी किया हुआ है in the second part, that due to this effect involuntary unemployment persists for long period of time. New Keynesian economists have suggested a number of measures. First is institutional measures. Lindbeck, this is E. Lindbeck and Snower have suggested that government can make institutional reforms. तो hysteresis effect को, involuntary unemployment को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए institutional reforms करने चाहिए, जैसे job security legislation, and can reduce the power of insiders, ताकि जो outsiders हैं उनको काम मिल सके और लॉन्ग टाइम तक जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो सके. Reform of benefit system. Unemployment benefits like unemployment allowance can be increased ताकि जो आउटसाइडर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको थोड़े बहुत इनकम हो सके. बट दिस मेजर कैन इंक्रीज शर्किंग ऑफ वर्क. Thus, other measures like labor mobility are beneficial. तो इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में. अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया तरीके से मिल रहा हो, तो लोगों को फिर काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. इसलिए वो शर्कर बन सकते हैं, अनएम्प्लॉयड बन सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू दिस अलाउंस. इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. अदर पॉलिसीज़ यूज़ करनी चाहिए, जैसे लेबर मोबिलिटी पॉलिसी हो कि लेबर को एक जगह से दूसरी जगह अगर काम मिल रहा है तो वहाँ जाने का सिस्टम, या फिर उनकी ट्रेनिंग का सिस्टम, स्किल का सिस्टम,
Organizational changes. Corporations should make organizational changes to increase the power of outsiders by introducing on-the-job training and profit-sharing schemes for workers. तो कॉरपोरेशंस आउटसाइडर्स की पावर को भी इंक्रीज करें ताकि वो लेबर मार्केट में आ सकें. By such measures, high involuntary unemployment may persist for a short period. तो फिर जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए ही रह जाएगी, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होगी, तो हिस्टेरिसिस अफेक्ट नहीं होगा. Re-establishment of policy effectiveness. Fisher, Phelps, and Taylor. Fisher, Stanley Fisher, served as governor of the Bank of Israel from 2005 to 2013. He previously served as chief economist at World Bank. United States President Barack Obama nominated Fisher to be vice chairman of the U.S. Federal Reserve Board of Governors. He holds a PhD degree from MIT, USA. Indian economist Ishar Judge Ahluwalia was his PhD student. Edmund Phelps is professor of economics at Columbia University, USA. He is the recipient of the 2006 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences. He was the doctoral student of James Tobin and Arthur Okun at Yale University, USA in 1959. And John Taylor is professor of economics at Stanford University, USA. Fisher, Phelps, and Taylor have shown that nominal demand disturbances produce real effects in theories that incorporate rational expectations when market clearing assumption is abundant. अब न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स में क्या है, जो मार्केट क्लियरिंग अजम्पशन है उसको नहीं ले रहे, क्योंकि एफिशिएंसी वेज जैसे है मार्केट क्लियरिंग से ऊपर रखी जा रही है, नो शर्किंग वेज. तो इन्होंने फिशर, फेल्प्स, टेलर ने ये शो किया है कि जब हम मार्केट क्लियरिंग अजम्पशन नहीं ले रहे तो जो नॉमिनल डिमांड डिस्टर्बेंसेस हैं दे प्रोड्यूस रियल इफेक्ट्स इन थ्योरीज. तो जिसमें हम रैशनल एक्सपेक्टेशंस को लेकर चलते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर लेबर, एक्सपेक्टेड सप्लाई ऑफ लेबर के हिसाब से वेज डिटरमिन हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हो जाते हैं. तो वो रियल इफेक्ट हैं जो होते हैं. इन सच थ्योरीज मॉनेटरी पॉलिसी कैन हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी. तो इस थ्योरीज में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इम्पॉर्टेंट है, इफेक्टिव है, ताकि जो वेजेस हैं उनको लोकल और कंट्री की इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके. फेवर रफ एंड कोर्स ट्यूनिंग. Monetarists and new classical economists favor the fine-tuning of the economy by frequent changes in monetary and fiscal policy to keep GNP or near full employment situation. तो जो मॉनेटरिस्ट हैं, न्यू क्लासिकल्स हैं, वो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को मानते हैं कि इनके साथ हम नियर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बना सकते हैं. ऑन द अदर हैंड जो न्यू केन्जियन इकोनॉमिस्ट्स हैं
They are favor in rough or coarse tuning, where monetary and fiscal policies are used to correct or avoid only large deviations from potential GNP. तो अगर कोई बहुत ज़्यादा चेंज है फिर पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं है. लास्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. दिस थ्योरी फेवर्स that there may be existence of involuntary unemployment. Last heading is criticism of new Keynesian economics. Lack of single theory. Snowdon and Wayne, Brian Snowdon is professor of economics and international business at Northumbria University, UK. Howard Wayne is professor of economics at Liverpool John Moores University, UK. स्नोडॉन एंड वेन इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स लिखी हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत अच्छी भी हैं. दे पॉइंटेड आउट दैट न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स इज एन एक्सट्रीमली heterogeneous collection of economists and ideas. तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स के आइडियाज़ की एक कलेक्शन है. दिस इज़ न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स. तो इसके पास कोई सिंगल थ्योरी इनकी नहीं है. Lack of empirical research. Mankiw pointed out that new Keynesian economics has been successful at the theoretical level. Theoretical level पे तो new Keynesian economics ठीक है, but there is a small empirical literature. तो empirical study अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं मिलती. Models based on rational expectations. According to Gordon, most new Keynesian models combine rational expectations with maximizing behavior at the level of individual agent. Means जो गॉर्डन है इन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल लेवल पर रैशनल एक्सपेक्टेशंस के बेस पे जो भी हम डिसीजन लेते हैं, ऑप्टिमम डिसीजन, मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर वाला डिसीजन, वो इन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे एक्सप्लेन किया है न्यू केन्जियंस ने. एनी अटेम्प्ट टू बिल्ड अ मॉडल बेस्ड ऑन इररेशनल बिहेवियर और सब मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर इज व्यूड एज चीटिंग. तो कोई भी हम अगर मॉडल बिल्ड करते हैं जिसमें मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ना लिया जाए, सब मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर लिया जाए, तो वो एक थ्योरी के लिए चीटिंग है. यूज ऑफ ISLM मॉडल. रॉबर्ट किंग, दिस इज कैपिटल K. Robert King is professor of economics at Boston University, USA. Robert King has criticized new Keynesian economists like Mankiw for their faith in the traditional ISLM model. तो ISLM मॉडल में जो भी कोई शॉर्टकमिंग्स हैं वो सारी इट मीन्स न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स की हैं. Finally, we conclude that by emphasizing real world based on imperfectly competitive markets and coordination failure, new Keynesian economists have developed macroeconomic models on firm microeconomic foundations, which reject continuous market clearing. तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स है इट इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, रियल वर्ल्ड सिचुएशन लाइक imperfect competition, coordination failure,
तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशंस के बेस पर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स दिए हैं, जिसमें मार्केट क्लियरिंग सिचुएशन को रिजेक्ट किया है कि मार्केट क्लियरिंग सिचुएशन से बेटर एफिशिएंसी वाली वेज जैसे हमने देखा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिस वाज ऑल अबाउट द न्यू केन्जियन economics, and if you want to study new Keynesian economics in detail, then must read this chapter from the book Macroeconomics by M.L. Jingan. The whole material used in 3 parts of the videos is taken from this book by Jingan. Thank you.